So I hosted two CMEs back to back on World No Tobacco Day, and I was with psychiatrists, psychologists, oncologists, respiratory physicians, and lots more. So इस CMEs में हमारे कुछ opinions on things exchange होते हैं, and there were some things I want to share जो मुझे काफ़ी लगा people should know about these things. So on tobacco, firstly I would like to share some opinions of psychiatrists. There were some senior psychiatrists who were like 60 plus and everything, that if you want to address tobacco जो आपको society में prevent करना है, also one of my professors during my MD who used to tell, if you want to prevent tobacco or any of the substance in the society, tell them and aware people that you don't try, because try करने के बाद you never know, you can get trapped and you can get addicted or get dependent on that. So it's better you don't try. Some of us raised a question that we are practicing in Gurgaon. There is a culture of like break mila office se, we should go for a sutta break and everything. A psychiatrist told us that how we can change this scenario. So we all are working with people in corporate world. So he was telling us that it can come from a CEO or a person from a higher position, that they inspire people. Like if they are having smoke or वेपिंग एंड एवरीथिंग, सो और लोग जो उनके कलीग्स हैं या फिर सबॉर्डिनेट्स वो भी करते हैं. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सीनियर पर्सन कि इफ़ दे इन्वॉल्व इन रनिंग एंड मैराथन, जैसे वो रनिंग और मैराथन में जाते हैं तो कैसे सब लोग इंस्पायर होते हैं जाते हैं. सो दीज आर सम चेंजेस शुड बी डन इन द सोसाइटी. That why tobacco is not banned. टबेको बेचने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है, बट टबेको को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट उनसे भी ज़्यादा पैसा कई बार लगाती है. नशे क्यों नहीं बैन हो सकते हैं? यदि हम नशे, अल्कोहल और टबेको या फिर और कोई भी नशे हैं, इनको जब बैन करते हैं तो देयर आर चांसेस कि लोग इलीगली या फिर मिक्स्ड फॉर्म में लें. जैसे कि अल्कोहल बैन हुआ था या बैन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इम्प्योरिटी वाला अल्कोहल लेते हैं एंड उनको ब्लाइंडनेस हो जाती है एंड एवरीथिंग. सो बैन इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर लाइक प्रिवेंशन. So in the panel there was a dentist and an oncologist who was doing head and neck surgery, oral surgeries for cancer. She was telling that there is a mental phenomena underlying in every person who is smoking or consuming tobacco. She emphasized कि कैसे हमें mental health को भी इस loop पे लेना चाहिए rather than only surgeries and doing counseling and everything. So I really wanted to share this with people that if someone is consuming tobacco or smoking cigarette, it's not like कि वो नशा कर रहा है या सिर्फ हैबिट है. There can be lots of things underlying this behavior. So there was also respiratory physicians in the panel and they told us that जैसे कि लोगों को लगता है कि vaping is better than cigarette and everything. They were telling that vaping से जब एकदम से बहुत ज़्यादा स्मोक अंदर जाता है तो कई बार उन्होंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसको एक्यूट लंग इंजरी बोलते हैं. उसमें सडन डेथ हो जाती है, सडन कोलैप्स हो जाता है. तो इसके भी हज़ार्ड्स हैं, इसके भी नुकसान हैं. ये भी इट्स नॉट हेल्दी. यदि मोस्टली लोगों को पता है कि इट्स नॉट हेल्दी. इफ़ यू डोंट नो दैट वेपिंग इज़ अनहेल्दी, सो लेट मी spread awareness about it, that vaping is also as unhealthy as smoking cigarette and sometimes it's more unhealthy. And also some of the female respiratory physicians tell us that smoking is increasing in the females also, and there would be a pandemic of infertility coming to us very soon because it has negative impacts on the bodies, whether it's a female or male. The female is directly involved in the childbirth and everything. So yes, it can be very dangerous when it comes to smoking. And in this discussion they totally discourage
पेरेंट्स जो बच्चों के साथ बैठ के स्मोकिंग करते हैं या उनके सामने स्मोकिंग करते हैं एंड चिल्ड्रन इसको ऐसा परसीव करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो हम भी ऐसे करेंगे. सो इट शुड बी डिस्करेज्ड इफ पेरेंट्स आर स्मोकिंग और डूइंग वेपिंग इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन. इट वाज लाइक अ वेरी बिग डिस्कशन अमंग clinicians and should be take care if you are a parent watching this video. A very senior neurologist was also with us in the discussion. She was telling that in Haryana जब उनको स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो जाता है, तो लोग आके बोलते हैं कि हुक्का और पानी इज वेरी मच इन्वॉल्व इन देयर लाइफ लाइक खाना. सो और कई बार मरीज आके ये भी बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था इससे ये भी हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को अवेयर करो कि टबैको, स्मोक ये सब अनहेल्दी हैं, इनके हजार्ड्स हैं. इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी इनसे होती हैं. सो अपार्ट फ्रॉम कैंसर एंड COPD, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग. So there was also a consultant from photomedicine. It's a very new thing she's doing from past 6 months. She was also part of our panelist. She was telling that there is a laser therapy or a phototherapy for smoking cessation. So she's doing from the past 6 months. She was telling that after one session, a person used to smoke 60 cigarettes per day, and he came to 20 and then he came to 5. Might be in future it can be a very promising thing. So it was a very good, amazing experience of 2 days when I was with lots of clinicians, listened their opinions on tobacco. It was very thoughtful. Some discussions were very interesting for me and also useful. So I thought I should make a video because one of the clinicians told us that patient आते हैं बोलते हैं हमें पता ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है. So this clicked me and I thought that time that I will make video about tobacco and everything. Thank you so much.